So good morning once again. Hmm. So under Mission Good Fateh, morning, you sir. know the object Morning, of the sir. objectives of the state government that we must all take precautionary measures from this deadly virus corona. है ना? The entire world is facing pandemic situation. So we must take some precautionary measures. Keep social distance, avoid social gathering, sanitize your hands, and download the COVA app and take other precautionary measures. Right? Just to take good diet, stay home, stay safe, and improve your immunity system. Okay, this is what we discussed last times. I mean, in the previous lectures, what is optical fiber, what are its basics, and how light can be propagated through optical fiber. Okay, so this is what we are already familiar with this optical fiber, how it conducts light. So it has to fulfill the total internal reflection. This is the condition which has to be achieved. So then only light can propagate through the fiber, right? Step index fiber, okay, basic structure we have already made discussions, and total internal reflection, then refractive indexes of core and cladding that we already discussed, right? You know what is the refractive index? It's the ratio of velocity of light to the velocity of the light through the material medium. This we are already familiar, right? Okay, now come to the page number 15. Page number 15. So it will take time just to make order. Yes. Now, how they look at the refractive index profile of the step index fiber. See how a refractive index of core and cladding is abruptly changing, right? So, and this is the cross section of core and cladding, and this is the side view. So, diameter of the core and diameter of the clad, this is what we discussed last time. And then this we already discussed. Come to the page number 30, right? Okay, come to the page number 30. Yes. Now, how light is propagating through the, look at, this is light propagation inside an optical fiber. The first one is straight fiber, second one is bent fiber. Even though, look at, even though light is propagating, it is not escaping. I mean, it is not escaping the core, right? It is not entering in clad, so still it is acceptable. It means bending of fibers up to some extent it is acceptable, because light is propagating in the form of total internal reflection. Even single beam is passing through, but it is not escaping core, rather it is not entering clad, right? So it means this propagation can be accepted. Clear? Okay, then critical incidence angle we have calculated, total internal reflections that we have made. Then come to the page number 13, 1, 3, just to make continuity. Look at. Now this is, I'm telling you about critical incidence angle and critical propagation angle. So again, this we have already discussed, but I'm just reviewing because of the, just because we, for the last 3 4 days we were discussing and on the fabrication techniques of the fiber, and of course some different types of optical fiber cables, what are their concentrations, I mean how many types of the cables are there, then how light can be, how many number of other fibers can be included in loose or in loose fibers, that we made discussions. So just to recall your memories for the previous lectures of how optical fibers conduct light. Again, I am making you familiar with the critical incidence angle and critical propagation angle, right? So look at the core. Core, this is this dotted line is an imaginary center axis, even though it is not visible, but for the sake of clarity, it has been shown. Okay. Now from A, this light from outside, when it is entering through the core, it is penetrating by the means of refraction. Okay. Now this ray with respect to this dotted ray, central axis,
is making an angle, and this is critical propagation angle, means light is propagating at this particular angle. Look at, and this ray is striking at the core cladding boundary. This is an interface, and wherever it is striking, this normal is coming into the picture. So it is making 90 degree at C. Look at this, alpha C is the critical propagation angle, and theta 1c, this is the internal critical angle, internal critical incident angle, okay, and this is 90 degree, fine. So look at, whenever now this dotted line, see this dotted line, light is escaping, rather it is going towards cladding, and it will be lost. So it means light energy will be lost if this light is propagating, not now this dotted line, ray of light, it is not fulfilling the TIR condition, right? Rather it has to be come back to the core itself, but it is escaping it. So entering in the clad, it will be lost. So this is how, because why it is escaping, because this ray of incident at this angle is more than a critical propagation angle. You know, this is critical propagation angle. So whichever light is striking at A at particular angle, that angle should be less than alphas or maximum alphas. Okay, so that light, it means that TIR condition can be fulfilled. Okay, and internal critical incidence angle is nothing, but here light is striking at the core cladding boundary. Okay, so from here we can calculate either theta 1c or alpha c. This we made already, we made discussions already many a times. Okay, this is what I am making you familiar. Then come to the 29 page. Today it is a different kind of experience we are facing. Anyhow, this is a random order. I will get you again. Huh? Now this is continuity, you know, from there. Okay, so now, yes, this is critical propagation angle. How we can calculate critical propagation? Sine inverse whole under root 1 minus n2 by n the whole square. So this is how critical propagation angle in terms of refractive index can be calculated, right? This mathematical expression we have already derived, right? Launching the light, understand the numerical aperture, that we have already familiar with. Many times we discussed. Look at this is how light can be launched. See the concept of numerical aperture. This is the light source from where light is coming, and that source can be any light source. It can be a lamp, it can be a UV lamp, or it can be some LED or laser. Rather, in optical fiber communication, we are preferring only LED or laser, maximum laser, because of its coherent beam, you know, and gap between this fiber and this light source. So this is air over here, and refractive index of this is this, you know, and this numerical aperture at this particular angle, twice the angle of theta, you know, theta A. This is angle of aperture angle, you know, sorry, acceptance angle, and twice of this, this is a complete angle. So this becomes a cone, and this is a aperture. If light is striking in this particular cone, I mean in the aperture of this only, that light will be accepted. Okay, now if it is going beyond, look at theta is increasing more than theta A. So this light is incidenting at this angle, and look at, it is propagating not through the core, rather it is escaping. So this is loss. It means numerical, whatever numerical aperture is nothing. It's the this is the area, or you can say uh, gathering ability of the light, which optical fiber can collect. You know. So from here only we can calculate this. Uh, you can say acceptance angle, critical propagation angle, and of course numerical aperture as well. That we made discussion already, right? Then come to the page number 12. Just for the sake of, yes, page number 12 is there. Yeah. Now this is page number 12. So this is how
acceptance angle can be related with this, you know, acceptance angle can be related with the critical propagation angle. This we made already, this we discussed many times already. I'm just repeating for your memory only for reviewing the lecture, right? Next page is 28 page. So look at numerical aperture. This is sine of theta A. Sine of theta A is what? This is acceptance angle. Okay, sine of theta A, right? And this next page is 28 page. 28 page. Just to make continuity. So how numerical aperture can be calculated in terms of refractive indexes? Whole and root n1 square minus n2 whole square, right? This we made discussions earlier many times, clear? And this can be expressed as a sine, and numerical aperture can also be expressed as a sine theta A, and this is equal to whole under 2 n minus n1 minus n1 the whole square minus n2 the whole square, where n1 and n2 are the refractive indexes of the core and clad, you know, core and clad. Then come to the page number 20. Page number 20, just to make continuity. Yes, now here delta is nothing, this is a uh, difference, you know, delta n is nothing, it is n1 minus n2. This difference is important, not only special delta n. So delta can be calculated n1 minus n2 over n. Look at, so this is delta is often called a relative index because this difference with respect to n. Okay, right? This we already discussed. And numerical aperture is n1 the whole square minus n2 the whole square, the under root. And using third algebraic identity, this can be made into two products, n1 minus n2 into n1 plus n2. So you can put down the value n1 minus n2 over from here, delta n that can be put over here, and n1 plus n2 that can become n2, 2n, I mean when n is approaching towards n2. Okay, so from here you can calculate numerical aperture as this also. So look at the various formulas of numerical aperture, right? Then this was 20 number page. Okay, this is just I'm reviewing. Then page come to the page number 19. 19. Okay, 19. Okay, 19. In 19, uh, some of the losses it has been discussed. Attenuation is the major loss. Look at, let me tell you how attenuation, I means the characteristics of the optical fiber, that is how light can be attenuated through the fiber. Means uh, it has to counter not only light is light because of bending, light lost of light can be lost because of scattering, because of bending, because of absorption as well. So light can be absorbed, it means light power is lost. Light can, attenuation is there whenever there is a I mean non-acceptable bendings of the fiber. All those bendings can be micro as well as macro, you know, while constructing or manufacturing the optical fiber. Even though, uh, uh, although sophisticated technology and latest and state of the art equipments and instruments are being used for the fabrication processes of the optical fiber and cables as well. But uh, at the time of fabrication and at the type of handling and installations, submicroscopic particles, and while adding the dopants for changing the refractive index of core and cladding, and of course handling and installation of the fiber. It can be hand on poles, it can be snubbed, I mean duct can be made, or it can be under the sea. So while handling and installations,
some major bendings are also there. Those are called macro bending, which are not acceptable. So due to micro and macro bending, uh, TIR condition is not achieved because, you know, I will show you in page in next page how microscopic uh, I mean how microscopic bendings are looking like that. Sub-microscopic bendings in the optical fiber. It's of so small size. Sub-microscopic particles um, are visible on the surface of the core and clad. So light, whenever it is penetrating through the fiber, it is striking the core cladding boundary, and because of the irregularities, a TIR condition is not achieved. Rather, it is escaping. Clear? So this way, it is introducing loss. Okay. Uh, okay, this was page number 19. Then come to the page number 3. I will show you. Okay, this is page number 3. Okay, bending was one cause, then absorption was another cause. You know, absorption, light is absorbed in the material. Light is absorbed in the material. Okay, even though whenever light is striking, it is absorbed in the form of photons, or whenever it is emitting, it is radiating. Okay, so delta is nothing, it is the energy gap of the two levels. Okay, and photon of the energy that we have already discussed. Okay, so light can be absorbed, and light absorption can be, it can be ion resonance absorption, it can be ultraviolet radiation absorption, or it can be infrared radiation absorption. Okay, and ion resonance absorption, it can be while uh, fabricating the fiber. You know, some moisture contents or water contents are remained there while. See, look at this OH negative ion. So this is a hydroxide ion, which remained while fabrication. Okay, so light can be absorbed because of this hydroxide ions also. Okay, and at a different wavelength it can be absorbed. So light can be absorbed not only because of the ion resonance absorption, it can be absorbed because of the infrared as well the ultraviolet. Okay, and let me show you. Look at this diagram. See, this is the wavelength of light, 700 nanometer to 1600 nanometer, and you are looking at these some peaks, you know, at 1945, 1240, then at 1380. Okay, you are looking some peaks, you know, these are the absorption loss peaks. This absorption may be because of uh, hydroxide ions. Look at OH negative ions. Okay, then absorption. Okay, these are the three wavelengths where peaks are much, you know. Otherwise scattering losses is also there, relay scattering losses. Okay, so if we draw the average losses of the fiber, ion absorption losses, then ion resonance absorption, ultraviolet, infrared absorption, and of course scattering losses, the curve will be looking like this. Okay, curve will be looking like this is loss in dB per kilometer and as per the wavelength. So at these particular wavelength 945, 1240, and then 1380, you know. So peaks are having a big bump, you know, hump you can say. Then this was page number 2. Then come to the page number 17. 117. Just to make continuity. Okay, 17. So uh, look at these three windows, three wavelengths where hydroxyl ion molecules have major peaks of absorption. Then three transparent windows we have already made discussed. Even introductory part of this particular subject at 850, 1300, and 1550. So attenuation is less. You know, these are the transparent windows where attenuation is less. Okay, so the even 1300 nanometer around, or 1310 nanometer and
1550 nanometer. So this is second and third generation can be meant for long distance communication. Okay. Okay. So how we can calculate total total Yes, sir. attenuation? Are you listening me? Yes, boys, students. Yes, sir. हेलो Yes, हाँ जी sir. सर। हाँ हाँ Yes, sir. ਇਹ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਂਡਮ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ हाँ ਰੈਂਡਮ जी ਆ सर। ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਤਮਾਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈਨ ਵੀਵ ਚੋਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਦਾਂ ਲਾਸ ਲਈਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੈ ਦੇਖੋ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਟ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਫਾਈਬਰ ਪੀ ਆਊਟ ਹੈ फाइबर लॉस कितना ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਟ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਫਾਈਬਰ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲੌਂਚਡ ਇਨਟੂ ਦੀ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਕਿਦਾਂ ਲੈਣਾ ਲਾਸ ਪੀ ਆਊਟ ਬਟੇ ਪੀ ਐਨ ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਟਸ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਸ ਜਾਂ ਅਟੈਨੂਏਸ਼ਨ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਸੀਬਲ ਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਅਸੀਂ ਡੈਸੀਬਲ ਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ -10 log 10 ਪੀ ਆਊਟ ਬਟੇ ਪੀ ਐਨ ओके पी आउट सो जो लॉस इन डेसीबल्स है तो फिर आ फिगर आती है तो पी आउट ते पी एन वो असी पहले तो वाट्स में मेजर किए पावर है पी आउट इज ऑलवेज लैस दैन पी एन क्योंकि जी आउटपुट पावर है वो लॉन्चिंग पावर नालों घट ही होनी है क्यों काहदे करके क्योंकि अटेन्यूएशन सिग्नल हो रहा लॉस हो रहा बैंडिंग लॉस हो रही एब्जॉर्प्शन हो रही है ठीक है स्कैटरिंग लॉस हो रही है स्कैटरिंग भी अगे कई तरह की है वो तुहानूं अगे पढ़ावांगे ठीक है तो जी आ वैल्यू log of 10 to the p out log of 10 I mean sorry p out over pn ਇਹਦਾ log ਲੈਣਾ to the base 10 is always negative ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ always negative ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਾਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਦੀ ਲਾਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਟੂ ਮੇਕ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ पॉजिटिव नंबर सो नेगेटिव साइन असी फार्मूले दे विच यूज करते हैं क्लियर हो गई गल हेलो हाँ जी सर। हाँ जी दिस इज एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इन Yes, sir. फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्लियर तो पेज नंबर 17 हुण इहदे विच 9 ते 10 ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਇਹ कैन बी यूज फॉर कंप्यूट द टोटल अटेन्यूएशन ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर ओके ਇਹ पेज नंबर 17 ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पेज नंबर 1 ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ So this is accepted practice in fiber optic communication technology. 3.9 and 3.10 can be used to compute the total attenuation of the optical fiber. It is quite obvious that loss is proportional to the fiber length. ये तो है ही आ क्योंकि 1 किलोमीटर लेंथ के पीछे जे ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਜੇ 0.16 dB पर किलोमीटर ਜਾਂ 0.5 dB पर किलोमीटर ਜਾਂ 0.3 dB पर किलोमीटर 1 किलोमीटर ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਜੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਈਬਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਲਾਸ ਜਾਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਈਬਰ ਹੋਇਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਉਨੀ ਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਟੋਟਲ ਅਟੈਨੂਏਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੀ ਫਾਈਬਰ ਲਾਸਸ themselves ਬਟ ਫਾਈਬਰ ਲੈਂਥ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਫੈਕਟ that makes this characteristics very ambiguous indeed you know that for one specific fiber loss मान लो कई बार इस कहने भी एक फाइबर लॉस ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 20 dB ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ 30 dB ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ 30 dB ਦਾ ਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ could you possibly predict which fiber will have the lower loss characteristics ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫਾਈਬਰ ਨੇ ਘੱਟ ਲਾਸ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ 100 ਮੀਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੈਂਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ तो सैकंड फाइबर जो है 100 किलोमीटर भी हो सकता इस करके डिपेंड करता भी वाई फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूजेस अनदर करैक्टरिस्टिक्स जिन्होंने ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਡੀਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡੀਬੀ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਡੀਬੀ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਦਾਂ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਟੈਨੂਏਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਫਾਈਬਰ ਆ ਦੇਖੋ ਅਟੈਨੂਏਸ਼ਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਫਾਈਬਰ ਲੈਂਥ ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਲਾਸ ਡੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਆ ਗਿਆ ਨੀਚੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ पता लग गया सो ए dB पर किलोमीटर जो अटेन्यूएशन है dB पर किलोमीटर है वो की आ dB का असं लॉस आ तो जी किलोमीटर ऑफ फाइबर की लेंथ है पता लग गया भाई बच्चों समझ आ गई हेलो बोलो हाँ सो दिस क्वांटिटी असं इस क्वांटिटी को कई बार की कहने इनू अटेन्यूएशन भी कह दें एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर अटेन्यूएशन इज द नंबर यू विल सी ऑन ऑप्टिकल फाइबर डाटा शीट and this feature is sometimes called cable loss factor
CLF भी कहने आ, इनू अटैन्यूएशन कोफिशिएंट भी कहने आ, बट मोस्ट ਜਿਹੜੇ फाइबर ऑप्टिक मैन्युफैक्चरर्स ने इस टर्म ਨੂੰ अटैन्यूएशन ही कहते हैं। ਹੁਣ 17 पेज तो बाद आप पहले पेज नंबर ਤੇ आ जाओ, फर्स्ट पेज ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣਾਉਣਾ। फर्स्ट पेज ਤੇ पहला पेज आ देखो अपना अटैन्यूएशन का टॉपिक चल रहा है ना, तो सॉरी फर्स्ट पेज आ फर्स्ट पेज। ਹੁਣ ਅਸੀਂ एग्जाम्पल एक ਲਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ एग्जाम्पल ਲਈ ਸੀ ਵੀ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ 10 ਤੇ 11 ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, तो ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ -10 log base 10 P out ਬਟੇ Pn, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 310 ਤੇ 311 ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਨੂਏਸ਼ਨ ਮਈ ਕਰਦੇ ਲਾਸ ਦੀ ਅਟੈਨੂਏਸ਼ਨ ਲਾਸ ਇਨ dB ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, यानी फाइबर की लेंथ अंतर ले, फिर असी आ लिखते हैं dB पर किलोमीटर। जो इसका नैगेटिव साइन वो असी इधर ले आंदा, सो कितना रह गया ये 10 log 10 P out बटे Pn आ ये dB च है बटे लेंथ इन किलोमीटर, पता लग गया। सो इस तरीके हम इतों असी की करते हैं P out कढ़नी आ, देखो अल्टीमेटली पर P out कढ़ने वास्ते पहला आ टर्म वखरा करो, इनू वखरा कर लो 10 log 10 P out Pn एक पासे रख लो, तो इधर जरा नीचे L किलोमीटर है वो A नाल मल्टीप्लाई करता ना, पता लग गया। और यदा जो 10 आ जो 10 से वो इधर नीचे लै जाओ, A दे नीचे लै जाओ, लै गया ना, उधरों कला ही log 10 रह गया। हाँ बच्चों क्लीयर हो रहा ना? हेलो हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ सिर्फ 7 मिनट बाकी रह गया। हुण देखो इतों आ ते आपां इतों जे मैं जे इहदा log 10 हटाउणा, जे log 10 हटाउणा ते फिर मैनू आ देखो ਇਹਦਾ log 10 होना, फिर जो log का आ बेस है 10 इधर A ते L ਉਹਦੀ पावर बन जाऊगी तो 10 ਉਹਦੇ नीचे आ जाएगा, पता लग गया। तो log दोनों पासे हट गया, यानी इतने उपर लॉगरिथमिक स्केल सी, थले एक्सपोनेंशियल है, आ मैथ आ, पता लग गया ना। इधर का जो log 10 हटाना P out बटे Pn कला ही रखना, तो फिर जो log 10 लाना तो मैनू ये आ जो 10 है इधर वाला का बेस बनाना पैना एक्सपोनेंशियल से, AL प्रोडक्ट हो गया, AL प्रोडक्ट किलोमीटर ना किलोमीटर कट गया, ऊपर कला dB A into L रह गया, तो 10 वो नीचे आ गया। सो पता लगा हम P out कढ़नी है तो Pn इनू गुणा कर दे। सो इस तरीके जी P out है वो असी इदा करते हैं। हम तुम P out देखो कितनी रह गई, इनपुट पावर आ देखो जे इतने मल्टीप्लाई किया 10 की पावर -AL बटे 10, जे मैं इनू नीचे लाऊंगा ये प्लस हो जाऊगा, 10 की पावर वो प्लस हो जाएगा ना, तो जानी यदा मतलब इनपुट पावर इन्होंने चीज़ों में वंडी जाती है, ਜਾਂ इनपुट पावर आ नैगेटिव 10 की पावर -AL बटे 10 के मल्टीप्लाई होनी, जानी आउटपुट पावर बहुत घट जाती है। समझ आ गई मेरी गल पल्ले पई? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ हुण आपां फॉर एग्जाम्पल लै लईए, फॉर एग्जाम्पल लै लईए, मान लो साडी इनपुट पावर जिहड़ी 1 मिली वाट है सपोज, तो जिहड़ा अटैਨੂਏਸ਼ਨ लॉस सीगा वो 0.5 dB सीगा, तो जी फाइबर की लेंथ सी वो मतलब 15 किलोमीटर है, 10 थले नाल ही आ गया, पता लग गया। आ एग्जाम्पल दी है पिछे, ठीक है। तो वो कहता जी इनपुट पावर है, जी पावर लॉन्च की असी वो 1 मिली वाट है, मतलब लाइट सोर्स की, तो जी फाइबर से डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, और अटैਨੂਏਸ਼ਨ जो फाइबर ने ऑफर की पर किलोमीटर 0.5 dB, और 10 ही नाल लगाई है, ये वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो इनू आ देख 15 5 75 7.5 बटे 10 आ गया, सो पॉइंट आ गया, इनू कैलकुलेट कर लेना। तो हम कैलकुलेट करने तो बाद आ देखो 10 की पावर कैलकुलेटर ना हो जाएगा पावर, ठीक है 0.178 आ गया, तो इनू 1 मिली वाट, तो तुम नोट करो कितनी पावर आई आउटपुट 0.178 मिली वाट। असी लॉन्च कितनी की सी 1 मिली वाट, अब समझ आ गई? हेलो हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ देखो पावर लॉन्चिंग कितनी सी 1 मिली वाट, ते मिली कितनी सानू 0.178 मिली वाट, घट गई है ना, बहुत घट गई, यानी बाकी पावर कितने गई, बाकी पावर का लॉस हो गया। समझ आ गई? तो ये तो असी 15 किलोमीटर लेंथ ली, जे लेंथ ज्यादा लवांगे पावर ज्यादा लॉस होगी, पता लग गया। आ देखो आ न्यूमेरिकली सारा कैलकुलेट किया थले, आ थले कैलकुलेट किया, ठीक है ठीक है, इदा इदा उन्हें किया है। सो असी जिहड़ा लॉस ऑफ dB पर किलोमीटर तो पहियर करते हैं, नैगेटिव साइन इस करके लगाया ताकि जो लॉस ऑफ पॉजिटिव वैल्यू हो, ठीक है। तो
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਉਜ਼ ਅਸ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਫਾਈਬਰ ਲੈਂਥ ਇਫ ਪੀ ਐਨ ਪੀ ਆਊਟ ਐਂਡ ਏ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਪਾਵਰ ਪੀ ਆਊਟ ਤੇ ਏ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਐਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਐਨ ਐਲ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਆ 3 12 ਤੋਂ ਪੀ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਐਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਏ ਐਲ 10 ਦਿੱਤਾ, ਏ ਐਲ ਬਟੇ 10। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਪਾਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਅਟੈਨੂਏਸ਼ਨ ਲਾਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਐਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੀ ਆ ਦੇਖੋ 3.13 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ 10 ਬਟੇ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, log of 10 ਪੀ ਐਨ ਬਟੇ ਪੀ ਆਊਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਅਟੈਨੂਏਸ਼ਨ ਲਾਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 1 ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ। पेज नंबर 1 तो बाद पेज नंबर होता 23 में देख लेना, क्विकली गो थ्रू हो कंटिन्यूटी बनाने वास्ते, ठीक है। 23 21 22 23 आ देखो ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਨੂਏਸ਼ਨ ਮੇਜਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਬੇਟੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਅਟੈਨੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ 2 ਮਿੰਟ 37 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ। देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड पावर मीटर that allows us to measure power of light. For a detailed discussion power meter कहता 8.5 8वें चैप्टर देखो। result is displayed in dBm which is the specific unit of power in decibels. तो कदों when reference power is 1 milliwatt, तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ dBm ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 milliwatt। ਰਿਮੈਂਬਰ 13.13 10.13 ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ dBm ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹੀ -10 log, ਜਦੋਂ log ਦਾ ਬੇਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ 10 ਹੈ। P out ਤੇ Pn ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 1 milliwatt। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਾਵਰ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ 1 milliwatt ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ dBm ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ dBm ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ milliwatt ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਦਰ ਡਿਸਪਲੇ ਰੀਡਿੰਗਸ in negative dBm, ठीक है। ये डायग्राम ऑफ एक्सपेरिमेंटल होना 1 मिनट 30 सेकंड रहेगा, 1.5 मिनट रहेगा, वेरी सिंपल। एक थले डायग्राम दी होनी आ देखो शायद आ देखो असल की आ जेड़ा लॉस आ वो इनपुट पावर दे विचों पी ऐदा घटा दिओ जेड़ा मतलब ये देखो आ ना 2 फाइबर दिते आ भी आपां किदां करना। एक कहंदा जेड़ा लॉस 1 मिनट सेकंड 7 सेकंड रह गया। एलईडी सोर्स है इतों आप फाइबर लगाता ये आप बहुत सारे उन्होंने टर्म्स देतियां है ना। पावर मीटर ने पावर मेजर कर दी, ठीक है। तो आ कनैक्टर लगे ने। हुण देखो कुछ फाइबर ने भी लॉस होना, कुछ कनैक्टर ने भी लॉस होना, क्योंकि कपलिंग करनी आप लाइट सोर्स में फाइबर ना कपल करने वास्ते सानू कनैक्टर चाहिए, इदा ही उधर चाहिए, नीचे भी इदा ही चाहिए। सो एक डायरैक्ट मेजर कर लो, इतने पावर है, ठीक है। तो ये उन्हें दसिया भी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर मेजरिंग अटैनुएशन वाइल मेजरिंग फाइबर अटैनुएशन विद कनैक्टर लॉसेस ते मेजरिंग विदाउट कनैक्शन लॉसेस, ठीक है। नहीं ये मैं तुहानू उदों बुक में दसांगा फिर दोबारा थोड़ा कोड नहीं होया प्रॉपर। हुण 1 मिनट तो घट रह गया। ओके बच्चे थोड़ा बहुत कंसैप्ट समझ आया अटैनुएशन का है की आ? हेलो रिस्पॉन्ड करो। हाँ जी सर। हाँ जी सर। चलो आई एम गोइंग टू स्टॉप है ना, तो शेयर करन लगा। तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਅੱਜ ਦੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ओके सर। हाँ जी सर। ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ।